So, good afternoon, everyone. I hope you can hear me. So, yeah, let's get started. So, last time we studied about rational numbers and their properties, and today we are going to start with representation of rational numbers on a number line this time. So, let's get started. So today we are just going to learn about representation of number line. So representation of rational numbers on the number line. So here we are going to learn about how to represent numbers or fraction on a number line. So let's open the slide. So we need to start from representation of number line. Let me just quickly open. So yes, so here you can see representation of rational numbers on the number line. So you might have learned to represent natural numbers on the number line, like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. So here in the figure you can see there is a number line, the one which I have highlighted, and these are the natural numbers that has been written, and the number line is divided into 8 equal parts. So here there's something written in the clouds. Let's check this out. So here the line extends indefinitely only to the right side of 1, because since you can see here it has been started from 1. See, from 1 it has been started, so we will move to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 till infinity. So now in this the number line has been divided into 8 equal parts, so that means we are just moving towards the right hand side. Now let's move to the whole numbers. So as you know, the whole number starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So in the given image here you can just see the whole numbers have been represented on a number line, and this number line is divided into 8 equal parts. So the line, let's read this one. Let's highlight this first and then we will read this. So over here the line extends indefinitely to the right, but from 0 there are no numbers to the left of 0. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू किया है 0 से and we are going towards 8. So यहाँ पे हमें clearly ये mention हो रहा है कि हमें forward direction में move करना है. That means we need to move towards the right hand side. So I hope you are clear with this, the first one. I think आपको अच्छे से समझ में आ गया हम natural numbers कैसे number line पे डालते हैं and whole numbers. And now we are just going to move to the integers. So as you already know, I think you have learned about integers. It includes of positive integers and negative integers. So here you can just see in the middle we can see there is 1 0
And at this part, we have got all the positive integers, okay, and here we have got all the negative integers. So we always start from, firstly we will first put a middle point and make it as 0, and then we will move to the positive ones, and we keep writing positive over here at the right hand side, and we keep writing negative integers over left hand side. And let's check what has been written in the bubble given over there. So let me just show you. So the line extends indefinitely on both sides. Do you see any numbers between negative 1, 0, 0, 1, etc.? Yes, we can see numbers. See, from 0 we can see 1, 2, 3, and this line will go up till okay, let's begin. I think my okay. So I think you are now clear with how we can plot the natural numbers on the number line and whole numbers on the number line, and we have just learned about the integers, like how to plot the integers on the number line. So now we are going to the main part of the representation, because we are going to learn about this, so you have to listen to me carefully over here. So on the fourth part you can see a number line. So it has been started with 0, and this side we are just moving towards the right, and as I told you, when we are moving towards the right we have to put a positive number or positive integer, and when we are moving towards the left we have to put negative integers. So here the line extends indefinitely on both the sides, but you can now see the numbers between negative 1, 0, 0, 1, etc. So here you can just see, as you are moving to the right side, the first number is half. After that, again, when you are moving to the next one, it will become 1. Same thing we are going for this also. When we are moving towards the left hand side, the first number that comes around is negative half, and then we'll get negative 1. So let's see what's written over here. So yes, the point on the number line 4, which is halfway between 0 and 1. So if you can see the point on the number line 4, this is number line 4. This is the number line 4, and here you can see the halfway between 0 and 1 has been labeled half. So 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? तो पहले होगा half, and then half अगर आप add करोगे तो वो बनेगा 1. So half add half gives you a 1. So that is what they are trying to make you understand over here. And now let's move to the fifth one.
So as you can see, there's a number line represented near the fifth. Let me just highlight it and show you. So here you can see this is the number line, and it's starting from 0, and then it is 1/3. And what comes the next? So after 1/3, what comes? So how would you label the second of these division point on a number line? So as we can see that the number line is divided into 1. Let me write. So it has been divided into 1, 2, 3. Okay, and if you can see from 0, it's moving towards 1/3. So the next number would be 2/3. Okay, the second number, the rational number that comes after 1/3 would be 2/3. Okay, and the third, so on we are going to do 3/3, and when we simplify 3/3 we would get 1. So 3 divided by 3 is nothing but 1. So we get 1 over here. So I hope you are clear with this now. Okay, and now let's move to the next one. So see, as I told you, 1/3, and then we will get 2/3, and then we will get 3/3, and then we will get 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, and 10/3. So here we learned about how to represent a rational number on a number line. So let's move to this one. Let me draw. Similarly, to represent 1/8, the number line may be divided into 8 equal parts. So here you can see, as you can see, the number line is divided into 8 equal parts, and the very first rational number that comes over here would be 1/8, and then followed by 2/8, 1/8. The first one would be 1/8. The second one would be 2/8. And the third one would be 3/8. Fourth one would be 4/8. And then 5/8, 6/8, and 7/8, and 8/8. And 8/8 is nothing but 1, because when we simplify 8 by 8, I mean if we divide 8 by 8, we would only get 1. So I hope we are clear here. अभी हमने पढ़ा कि हम कैसे एक नंबर लाइन में पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसे कैसे 0 से लेकर 1 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर ये नंबर लाइन 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पहला पार्ट आपका होगा 1/8, दूसरा होगा 2/8, तीसरा होगा 3/8, चौथा होगा 4/8, so on 8/8. And when we simplify 8/8, we already know we will get 1. Okay, so we learned about how to represent fractions on a number line, I mean the rational numbers. And चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे 8th one. सो 8th one में क्या दिया गया है? ये भी एक नंबर लाइन है जो 0 से शुरू हो रही है और यहाँ पे 1 तक ख़त्म हो रही है. तो ये हमारा ये शो कर रहा है कि ये जो नंबर लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. सो ये हमारा नंबर लाइन 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और जो पहला पार्ट है, जो इसका पहला पार्ट होता है वो होता है 1 9, फिर 2 9s, and then 3, so on 9 9. And you know this clearly that when we divide 9 by 9 we will get 1. So
we are done with the 8th one also. And now अब हम 9th one करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है. So यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. तो एज आई टोल्ड यू बिफोर ओनली, जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं नंबर लाइन में तो वो नंबर क्या हो जाता है, वो नंबर हो जाता है आपका नेगेटिव नंबर. ओके, जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर हमारा नेगेटिव हो जाता है. और हम अब देखेंगे कि हम कैसे इस नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स को लिखते हैं. तो यहाँ पे आपका दिख रहा है 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होके 1/4 and then 2/4, 3/4, 4/4, and 4/4 is nothing but -1 because -4/4 is equal to -1 because it gets cancelled out and we will get 1 and there's one negative symbol, so we have to just put that symbol near the number. And then we are going to move to the 5/4, 6/4, -5/4, -6/4, -7/4 and up till -8/4. So आप ये सोचेंगे यहाँ पे -2 कैसे आया. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -8/4 है. So 4 times 2 gives you 8 and यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है तो हमने यहाँ पे -2 डाला है. So इस वजह से हमारा यहाँ पे 2 आया है. So now I think you are clear with this. तो हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ट्राई दीज वाला. तो पहले मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कौन सा हमें अभी करना है. तो पहला हम करेंगे. So let's start with the first one. So here in the first one, you can just see यहाँ पे कुछ दिया हुआ है A, B, C, D और E. ये 5 पॉइंट्स आपको पता करने हैं कि ये 5 पॉइंट्स की वैल्यू क्या है. तो आपका जो पहला है वो 0 है, 0 से शुरू हो रहा है, 0/5 है. ओके, सो all the fifths are divided into 12 equal parts. Can you see here 12 fifths? So यहाँ पे आपके जो नंबर लाइन है 12 equal parts में बटा हुआ है. पहला है आपका 0/5, दूसरा आपका होगा 1/5 बिकॉज A हमें नहीं पता है, 0 के बाद 1 आता है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा 1/5. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/5 एंड देन फिर मैं नेक्स्ट को मूव करूँगी. तो नेक्स्ट में इट्स ऑलरेडी रिटन देयर 2/5, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग विद दिस. एंड देन the third one is 3/5. So 3/5 हमें पता है after 2 3 comes, so हम वही लिखेंगे. अब हमें ये जानना है कि हमारा B point क्या है. So as we already know it is 3/5. So what's the next number after 3? 3 के बाद हमारा क्या आता है, 4 आता है. तो 4 आता है, उसकी वजह से हमारा ये नेक्स्ट वाला नंबर होगा, the fraction becomes 4/5. Okay, and now अब हमें C जानना है. तो after 4 what comes, 5. So that will become 5/5 and that is nothing but 1 because when we divide 5 by 5 we would get 1. So here we get 5/5 and then the next is 6/5 and then 7/5 and 7 के बाद 8 आता है. तो here it will be 8/5. So I hope you are clear here. So हमें E जानना है कि E हमारा क्या है. तो E हमारा होगा 9/5. ओके, सो आई कैन एक्सपेक्ट कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 10/5, 11/5 एंड 12/5. सो वी आर डन विद द फर्स्ट वन. अब हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे.
अब हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट कैसे कर पा रहे हैं। तो मैं अपना कलर चेंज कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो सेकंड हम करने जा रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव्स में जा रहा है क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। तो अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव होता है तो हमें ये बात पता है कि ये नेगेटिव्स में जा रहा है। अगर ये राइट साइड को मूव होता है तो हमें ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, तो पहला वाला जो है वो है 06, और उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट वाला जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो -1 हो जाएगा, सो 1/6 हो जाएगा। और द सेम वे ये जो आपका नंबर लाइन है ये सारा आपका 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको? 12 पार्ट्स में। तो पहला जो हमारा है -1/6 है, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, हमें f फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हमारे f की जगह हो जाएगा -26, एंड हम अब 26 को सिंप्लीफाई करेंगे। लेट मी, आई थिंक देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई, बिकॉज अगर हम 26 को सिंप्लीफाई भी करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन में ही आंसर आने वाला है, दैट इज 1/3, -1/3, so there's no need to simplify. Now we will move to the next one. यहाँ 4/5 के बाद हमारा क्या होता है, 5 आता है, तो next would be 5/6, so the -5/6 because it is in negatives, so next one would be 5/6, and next जो हमारा है 6/6 है, और उसके बाद 6/6 के बाद वाला जो है वो हमारा -7/6 हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर हियर। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे वो हमारा होगा -8/6, एंड यहाँ पे 10 के बाद आते हैं। -10 के बाद हम देखेंगे तो 11 आता है, तो ये हमारा हो जाएगा -11/6। अब आपने ये जाना कि हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, एंड अब हम मूव करेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यहाँ पे आपके दो रैशनल नंबर होंगे, उनके बीच का रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। So let's get started with this now. So let me just erase this, and then we will just move on to rational numbers between two rational numbers. So can you tell the natural numbers between 1 and 5? So आप ये जानते हैं 1 और 5 के बीच में जो numbers आते हैं वो हो गए आपके रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5। सो 1 और 5 के बीच में क्या आता है अब हम देखेंगे। तो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, और अब हम यहाँ पे 1 और 5 के बीच में हमें ढूंढना है रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 5. So now we are going to learn how to find out the rational numbers between the given numbers. So let's get started. तो हमें पता है 1 and 5 के बीच का जो rational number होगा वो है हमारा 2, 3, okay, and 4. So हमने ये जाना कि 1 और 5 के बीच का जो नंबर है वो है 2, 3 and 4. So 2, 3 and 4 are the rational numbers between 1 and 5. So I hope you are clear till here कि हमें rational numbers
कैसे पता करना है दो रैशनल नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पे हम आते हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 7 एंड 9। अब 7 और 9 के बीच में आपका कौन सा रैशनल नंबर है? तो 7 और 9 के बीच में हमारा क्या आता है? 8 आता है. So as you can see here, it's written there is 1 and it is 8. Now let's move to the next one. How many natural numbers are there between 10 and 11? So 10 और 11 के बीच में क्या आता है? Obviously there is nothing, so there are no rational numbers between 10 and 11. So now let's move to the next. List the integers that lie between -5 and -4. So -5 और -4 के बीच में जो numbers आते हैं आपके, sorry, -5 and 4, +4. So as I told you, whenever we are moving to the left, we are going for the negatives, and when we are moving to the right, we are going for the positives. So as we know, अब हमें कहाँ जाना है? पीछे की तरफ जाना है. So 5 के बाद क्या आता है? 4. So -4. फिर 4 के बाद आता है हमारा 3. So -3. फिर 3 के बाद 2 आता है, that will become -2, and then -1, and then we know, we have learned, उसके बाद हमारा 0 आता है, followed with all the positive numbers that are 1, 2 and 3. So see how it is easy to find rational numbers between two numbers. Okay, so अब मैं कुछ examples लेती हूँ जिसमें मैं ये आपको समझाऊंगी कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर्स. सो अगर आपको कुछ नंबर दे दिया, जैसे कि लेट मी कम टू दिस. So let's find out some rational number between let's say 2 and 4. So 2 and 4 के बीच में जो आपका नंबर है वो होगा आपका रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4. तो आपका बीच में क्या आता है? 2 और 4 के 3 आता है. अब और इजी वे में देख लेते हैं. 4 and 5, अगर आपको बोला जाए 4 और 5 के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे? आप उसके बीच का नंबर देखेंगे, क्या होगा 4 और 5 के बीच में? कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसे नन कहते हैं. और अब हम देखेंगे 5 और 7 के बीच में. सो 5 और 7 के बीच का जो रैशनल नंबर होता है वो 6 होता है. तो ये है आपका रैशनल नंबर. एंड अब हम लेंगे कुछ और एग्जाम्पल. तो लेट मी जस्ट मूव टू दिस. So let's open the notes and we are going to learn on the notes now. So let me just ओके. अब हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम सीखेंगे कि हमें, अब देखिए जो आपको मैं एक और बताती हूँ. 11 और 20 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो 11 और 20 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके होंगे रैशनल नंबर. तो चलो लिखते हैं. सो 11 के बाद आता है हमारा 12. 12 के बाद हमारा आता है 13. 13 के बाद आता है 14. 14 के बाद आता है 15.
and then 16, फिर हमारा होता है 17 and then 18, 19. So ये सारे नंबर्स आपके हो गए 11 और 20 के बीच के रैशनल नंबर्स. अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि 0 और 1 के बीच का रैशनल नंबर कैसे जाने. तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसको बंद कर लेते हैं. तो let's find out a rational number between 0 and 1. So 0 और 1 के बीच में आप सोच रहे होंगे कि हम रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं. तो it's very simple. I'm just going to teach you how to. Okay, wait, give me a second. How to find out rational number between 0 and 1. So let's just start with the scratch now. Let me just remove this. Okay. So I think we have got enough space. तो हम यहाँ पे कर सकते हैं whatever we need to do. So let's start. तो अब हम ये जानेंगे कि 0 and 1 के बीच में आपके रैशनल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं. 0 and 1. तो पहला जो तरीका है इसे फाइंड आउट करने का, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर लेना है और आपको उससे इंटू करना है. सो हम ये जानते हैं 0 कैन बी रिटन एज 0 by 1. Okay, and we can just times it by 10 at the top and 10 at the bottom, and then we know 0 times 10 is 0, and then 10 times 1 is 10, so we will get 0, 10. अब हम चलते हैं 1 की तरफ. So let me move. अब हमारा 1 है, तो 1 times 10 is 10, and then and उसके नीचे वाला जो नंबर है 10 है, तो 1 times 10 is again 10, so that will be 10 upon 10. अब हम ये जानते हैं 0 और 10 के बीच में हम नंबर्स आराम से लिख सकते हैं, जो ये आपका 0 और 10 है. सो अब इनके बीच के नंबर्स क्या होंगे, वो होंगे 1/10, उसके बाद होंगे आपके 2/10, 3/10, फिर आपका होगा 4/10. सो टिल आपका हो जाएगा 9/10. सो इतने सारे हमने नंबर्स फाइंड आउट कर लिए 0 and 10 के बीच में. सो आई थिंक यू आर क्लियर. 0 and 10 के बीच के नंबर रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. कुछ नहीं करना होता है. पहला क्या स्टेप है आपको करने वाला, आपको डिनोमिनेटर में 1 डालना है एंड देन टाइम्स करना है at the top with the same number. So we have taken 10 at the top and 10 at the bottom. That gave us 0 by 10. And for 1, we did the same thing and we got 10 by 10. Okay? So हमने क्या किया, हमें 0 by 10 मिला and then फिर हमें 10 by 10 मिला. अब इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर्स हैं हमने यहाँ पे सारे लिख लिए, और ये जो बीच के नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं between 0 and 1. So I hope you are clear with this now, like how to find rational numbers between 0 and 1. अब आप ये सोचेंगे कि मैंने तो 10 डाल दिया यहाँ पे, अब क्या आप कोई और नंबर्स डाल सकते हैं. तो येस ऑफ कोर्स आप कोई भी नंबर्स डाल सकते हैं. आप 10 की जगह 100 डाल सकते हैं.
तो चलो हम वो करके देखते हैं अभी. सो यस, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 0 बाई 1 टाइम्स 100 बाई 100. ये दूसरा तरीका है फाइंड आउट करने का. अगर आपको ये बोला जाए कि आपको 10 से ज़्यादा नंबर फाइंड आउट करना है तो आप बड़ा नंबर ले सकते हैं. दूसरा हमारा क्या था, 1 बाई 1, जिसको हम लिखेंगे 100 बाई 100. तो जैसे कि आपने देखा, पहला वाला होगा 0 टाइम्स 100, दैट इज़ नथिंग बट 0, और 1 टाइम्स 100 इज़ 100. सो ये आपका 0 बाई 100 हो गया. और 1 टाइम्स 100 सेकेंड वाले पे जाएंगे, वो होगा हमारा 100 बाई 100. सो 100 बाई 100. सो आप अब इससे पता कर सकते हैं कि इसके बीच के नंबर्स कैसे शुरू होंगे. तो आप 1 बाई 100 लिख सकते हैं, 1 by 100, 2 by 100, 3 by 100, up to 99 by 100. So 99 तक आप लिख सकते हैं. So this is another way to find out rational number between 0 and 1. Like if you need to find more than 10 rational numbers, so you can take a bigger number and find out. So ये तो रहा हमारा positive numbers का. अब व्हाट इफ अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि फ्रैक्शनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो लेट्स चेक हम कैसे ढूंढेंगे. तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं, स्क्रीन क्लियर करेंगे. उसके बाद हम सीखेंगे कि हमें कैसे शुरू करना है. फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको दिया जाए और उसके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं. Just give me a second. We will just rub the screen and then we will start doing how to find out rational number between the fractions. So yes, so I think this much of space is enough. So let's write down first. So let me think of a number then. So let's find rational number between 2/3 and 5/6. So 2/3 और 5/6 के बीच का जो रैशनल नंबर होता है वो हमें फाइंड आउट करना है. बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के न्यूमरेटर्स अलग हैं एंड दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पे अलग हैं. तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे जब दोनों के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स अलग हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. सो let me just rub this and start. Okay, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स कैसे किए जाते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे 3 है. At the numerator we can see we have 3 and 6. So we are going to take LCM of 3 and 6. So when we take LCM of 3 and 6, we would probably get 6. I think you know how to do LCM. I think there's no need to do learn how to do LCM. Or if it is needed, let me show you how to start with LCM here. So कैसे किया जाता है LCM मैं बताती हूँ. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि आपको 3 और 6 यहाँ पे लिखना है एंड आपको स्टार्ट करना है टाइम्स टेबल 2 से. सो आपको पता है 2 3 की टेबल में 3 2 की टेबल में नहीं आएगा, तो हमें एज इट इज़ लिख लेना है 3 यहाँ पे.
and then हमें पता है 2 times 3 is 6, so we'll get to write 3 over here, and then we know 3 goes into 3 one time, so we will write 1 and 1 over here, so 2 times 3 will give you 6. So this is how we can find out the LCM. So I think you're clear now. अब हम फाइंड आउट करें, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा LCM 6 है, और अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 6 के बाद हमें कैसे फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 5/6. So let me just make some space over here so that we can do some. So yeah, तो जैसे कि आपने ये देखा कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है, वो है हमारा 2/3 एंड एक जगह पे है हमारा 5/6, एंड हमें पता है इसका LCM होता है 6. So 3 times, how much will give you 6? 3 times 2. So जिस तरीके से नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे हमें पता है 6 times 1 gives us 6, so ऊपर भी हमें 1 से करना है. तो हमारा यहाँ पे आ गया 2 times 2, that is 4, and 3 times 2, that is nothing but 6. 4 6 आ गया. अब यहाँ नेक्स्ट वाले में जाते हैं. 5 times 1 होता है 5, and then we know 6 times 1 is 6, so that is 5 6. So 4 6 and 5 6 के बीच के नंबर्स अब हम लिखेंगे. अब इन दोनों को के बीच के नंबर्स हमें तो पता है नहीं, तो हमें वही रूल फॉलो करना है जो हमने 0 and 1 के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के टाइम सीखा था. तो 4 ऊपर 4 है, नीचे 6 है. सो आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे. चलो लेते हैं 10. सो 4 times 10 ऊपर और नीचे भी 10, तो हमारा हो गया 40/68. तो हमारा पहला तो आ गया. अब दूसरा हमारा 5 6 है. सेम वे हम यहाँ पे भी वही करेंगे. 5/6 times 10 at the top and times 10 at the bottom, and when we are just going to multiply the numbers, we would get, for the first we would get 50 at the numerator and 60 at the denominator. अब हमें find out करना है इन दोनों नंबर के बीच के rational numbers. So it's pretty easy to find out the rational number between 40/68 and 50/68. So let me write over here. So let me change the color so that it's more visible to you. So 41/60 है हमारा पहला rational number, and उसके बाद 42/60 है हमारा दूसरा rational number, and उसके बाद 43 and 60 हमारा तीसरा, and so on. हमें सारे rational number लिखते जाने हैं 49/68 तक. So I hope you are clear now, like how to find rational number between two fractions. अब बात आती है ऐसे नंबर्स की जहाँ पे दो नेगेटिव्स होते हैं. So अब हम करते हैं. तो अगर आपके अगर आपके दो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो भी नेगेटिव में, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या किया जाए, हम क्या कर सकते हैं. तो लेट्स फाइंड आउट. इफ यू वांट टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and -2, -3 and -2, so the same way, same procedure we are going to follow here also. So -3 divided by 1, because there's nothing, so we can put a 1 down there,
At the bottom, I mean at the denominator, and here also we are going to put 1, and then we have to choose any number. So let's take any number. So let me think. Okay, let me take 4. 4 at the top and 4 at the bottom. और यहाँ पे भी हमें करना है 4 at the top and 4 at the bottom. अब हम देखेंगे 3 times 4 कितने होते हैं 12, एंड वहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव 12, एंड 4 times 1 is 4, तो हमारा यहाँ आ गया नेगेटिव 12/4. अब वहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव 8/4. अब हमें कहाँ जाना है, अभी हम नेगेटिव्स पे जा रहे हैं, तो 12 के पीछे क्या आएगा 11 आएगा. 11/4 ये है आपका पहला रैशनल नंबर. फिर आपका दूसरा हो जाएगा 10/4, क्योंकि 11 अगर आप पीछे जा रहे हैं तो 10 आएगा. उसके बाद हमारा हो जाएगा 9/4 एंड सो ऑन. तो आपने यहाँ पे ये देखा कि हमें रैशनल नंबर्स नेगेटिव्स में भी मिल गए. वो हैं -10/4, -11/4, -9/4. So I hope you are clear with the negatives. Like whenever we find negatives, we just need to do multiplication at the top and at the bottom with the same number at both the ends, and then we just need to write the fractions and write all the numbers between the fractions. So I hope you are clear with this. So आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं. पहला टॉपिक है रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, and the second topic that we have covered today is how to find rational numbers between two given fractions, or rational numbers, or negative numbers, positive numbers. So I hope you are clear with the topic that we have done today. So let's have a quick recap. Let's see whatever we have learned today. So नंबर लाइन पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हम कैसे नंबर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो आपने यहाँ पे देखा कि ए को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 0 के बाद 1 होता है तो 1/5 हो गया. एंड यहाँ पे हमने देखा जब हम नेगेटिव्स में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम आगे की तरफ मुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो -10 के बाद -11 आता है तो आपका हो गया -11/6. एंड यहाँ पे इस तरफ हम पीछे की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव्स में. सो 2 के पीछे क्या आता है, 3 के पीछे क्या आता है 2 आता है. सो यहाँ पे हो गया आपका -2/6. सो I hope you are clear with the 2 topics that we have learned today. So now I am just going to stop the class, and in the next upcoming session we are going to deal with a new topic, that is algebraic expressions and linear equation. So till then, bye bye and take care of yourself, and do subscribe the channel.